वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं इनसाइड हमास टनल्स अंडर अल शिफा हॉस्पिटल इन गाजा। लो अब दिखेगा सबको, सबके होश उड़ेंगे। मैंने भी एक टनल देखी हुई है बहुत, पर वो मेरे ख्याल से वो हॉस्पिटल के नीचे वाली नहीं थी, वो कहीं और उन्होंने टनल देखी में की हुई थी। अब ये देखते हैं, जो बोल रहे थे ना कि हॉस्पिटल के फलाना ठमकाना अटैक कर रहे हैं, अब ये सबूत भी आ गया कि हॉस्पिटल के नीचे किया क्या गया। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं था एग्जैक्टली हॉस्पिटल के नीचे, बट ये है कि हॉस्पिटल के पास से जा रही थी और इससे नजर ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कमांड सेंटर मिला हो। अच्छा, मगर इतना जरूर मिल गया, इनफ चीजें मिल गई हैं टू से कि घपला था। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। In the SHlFA Hospital compound, we're underneath the ground. We are approximately between the Qatarian building is above us, and this is the way to the street. Meaning this is a way that goes outside from the hospital. We are talking about a tunnel which is more than this, only this specific area is more than 300 meters of a tunnel. So this area goes directly outside of the hospital, approximately to one of the areas outside, maybe a mosque, maybe an apartment. It's blocked. It's blocked and sealed. They knew that we were going to come here more than a month ago, and they sealed it. And now we're going to see the infrastructure of the tunnel. This tunnel is a complex tunnel. It's not the ones that we know. It's more convenient for long living, like you have toilets. And you have rooms. क्या बढ़िया टॉयलेट, पूरा घर बनाया हुआ टाइम से। शावर है in order to contain people. But this room is an operational room that had communication with electricity provided from the sources of the hospital, meaning the hospital is providing electricity. देखा? This room was evacuated, all the gear was evacuated. I guess it was evacuated when they knew or understand that we're going to enter into SHlFA Hospital. जब पता चला इन्हें कि आएंगे ये हॉस्पिटल में, तब ये सब छोड़ छाड़ के हटा के गए हैं। You can see how long it is. The warriors in front of us are going inside the tunnel. You can see a small kitchen. सिंक वगैरह। ओए होए, पूरे टाइले वाइले लगा So के we provide them food, water, etc. All these facilities of water and food are coming from the hospital. फूड पानी They're using the hospital infrastructures. They're using the hospital infrastructures in order to provide this terror mechanism to stay alive and survive. अब देखा? ये सब नया आया। I want to show you more rooms. My God. More rooms. This is a room, where you can sleep, eat, make command control. It also has an air conditioning. मिल गया। वो एक कंडीशनिंग ये कमांड सेंटर मिल गया इसका मतलब। Above the hospital. above the hospital है। मिल गया सब। From this complex, we found the engine or the air conditioner, of course, outside. Next to the Qatarian compound, inside the hospital, electricity for electricity. कमांड सेंटर है तो पूरा। The gear that was inside here was evacuated before we entered. But look at the ceiling. This is not just a regular tunnel. This is a high facility compound. हाई फैसिलिटी कंपाउंड है, देख लो। Also more toilets here. कितने टॉयलेट्स हैं, कितने लोगों के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। केबल्स जा रहे हैं पूरे। हाँ, तारे तूरे कम्युनिकेशन के लिए जो फोन शोन रखे होंगे इन्होंने। मैंने जो टनल्स देखी ना, वो इस टाइप की मिट्टी वाली और इस टाइप की थी पतली, जो मैंने देखी थी ऐसी थी कुछ। Of course, they tried to seal it. They tried to seal it also with sand and other components that we will not be able to enter here. We evacuated the sand. We opened up those entrance so we can go in, but they trying to ruin this tunnel in order for us not to be able to enter. बहुत प्लान करके बंद करके पूरा गए। क्लीन किया इसका मतलब। हाँ, को जितना कर पाए हैं। मतलब उनको पता था ये आने वाले हैं, उन्होंने सब इसको बंद बुंद करके छुपाने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की है। माय गॉड, क्या लंबी लंबी टनल्स हैं, और वो भी
हॉस्पिटल के नीचे सारी और सारे See the stairs here going down. तो बहुत ही उस टाइप से हाई टेक बनाया हुआ है. Electricity from all over the sides are electricity. जो मैंने देखी थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, ये तो उससे भी बढ़िया ये है. तो अल-शिफा के नीचे मिली है वो. उन्हीं से पानी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उन्हीं से ले रहे हैं, खाना भी उनको ऊपर से वहीं से मिल रहा है. All this electricity compound, all this electricity gear, of course, Sure, comes yeah. out from the hospital. The hospital provides, in that sense, electricity हॉस्पिटल से. to this stir mechanism of the tunnel. पूरे हॉस्पिटल लोग मिले हुए हैं वहां से, हॉस्पिटल से पूरा आ रहा है. पूरा हॉस्पिटल इनके साथ था. This is a unique signature of the arches. The arches are a unique technique by Hamas, building the tunnels. It's something that was designed in the last 15 years. This 15 unique years. every area that we see arches are we understand Reinforced that concrete. it assembled that it has a tunnel next to it. This is how we revealed some of the tunnels, so it's a unique structure of Hamas tunnels in the last 15 years. 15 साल में इन्होंने ये सब किया है और इतने चालू हॉस्पिटलों के नीचे, और ताकि दुनिया को दिखा सके भैया इजराइल तो हॉस्पिटलों को अटैक कर रहा है और हॉस्पिटल भी मिला हुआ. मैं तो पहले कहा था इन लोगों के लिए ह्यूमन वैल्यू कुछ नहीं थी, ये सब चालाकियां थी हॉस्पिटल के नीचे The छुपे बैठे. warriors, it took time to make sure that this area is not booby trapped. We were worried that it was booby trapped. Cleaning this area, opening it so we can go inside, was a huge task for the forces of the special units that were here. सब बंद किया हुआ था. ये मिट्टी भरी हुई थी. सब और बूबी ट्रैप्स भी थे, इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़े. देखो बंद किया हुआ है, तभी तो ये देखो थोड़ी थोड़ी जगह बन निकाली है इन्होंने, पूरा भर दिया. भर दिया था इन्होंने. Where the warrior is standing here, it goes directly to the street. Meaning Street. it again goes out from the hospital to the north side of the hospital, where we found another tunnel which has an elevator like the Rentisi tunnel, and it goes up and goes out. So it's all a tunnel systems that ends in the hospital. It's a mechanism of a tunnel system that ends in the hospital. Now we're going to turn left and go out again in the hospital just to see the size of the tunnel. माय गॉड, सारा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द और बाहर जा रही है उसकी. यहाँ से लेफ्ट है. वहां पे भी वो बाहर जाएगी स्ट्रीट पे. यहाँ एक और है. This is the blast door, the one that we opened, where we have seen in the movie that we reached to the blast door. We took us time to open it. We were making sure it's not booby trapped. These blast doors allows them to prevent blasts by our air force, meaning it can maintain the preservation of parts of the tunnel to be protected, and also it's part of fighting. So if an enemy reaches to the door, you can fight him through the door. So it's a really sophisticated mechanism in that sense, designed to fight. And all this mechanism above us is a hospital. Above us, patient, wounded, बाय गॉड सब मिल गया doctors, इनको. all being a human shield for this tunnel system here at SHlFA Hospital. वेरी गुड, आप लोगों ने फाइंड करा. सारी दुनिया की बोलती बंद की, जो बड़े सपोर्ट कर रहे थे कि हॉस्पिटलों को अटैक कर रहे हैं. मैं तो तब से टाइम लगा रहे थे उससे लगा रहे थे क्योंकि उनको ये सब क्लीन करना था. वो चुप थे, कह रहे थे अभी तुमको दुनिया को दिखाएंगे हम. Is the electricity that provide the communication, the command and control. Meaning from those tunnels you can command and control all the terror mechanism waging war outside in Gaza. This is why all the battalion's commander, all the senior commander terrorists came here to command their operation, went outside, went back to the hospital to do command and control. देख लो, ढूंढ लिया. सब बोल रहे थे मिले नहीं. ये लो, ऊपर हॉस्पिटल है, ये सब हॉस्पिटल के क्योंकि नीचे. ये सब जो भर दिया था उन्होंने. हाँ, छुपा के रखा था, ढूंढने में टाइम लग रहा था. क्या हुआ? This is the way out with the stairs. ये सब भरा होगा. ये सब भर दिया था उन्होंने. मिट्टी से भर दिया था पूरा कि कोई आ ना सके. With the bulldozer, all the sand fell down. So it's not now it's not available to go out.
but we will show you because remember the movie that we showed with the drone, it ends here. यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एग्जिट है। ये सब उन्होंने बंद कर दिया था ना, तो इन्होंने बुलडोजर से किया, तो उससे अब ये ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा। कितने पूरी कोशिश की थी ये सब ना मिले। और ह्यूमन शील्ड ऊपर हॉस्पिटल जहाँ पे वुंडेड है, यही तो बता रहे हैं, वुंडेड घायल लोगों को ऊपर रखा हुआ, नीचे ये काम हो रहे हैं। और हॉस्पिटल भी मिला हुआ है, उनको पता है नीचे है, वही सप्लाइयाँ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, खाना वहीं से आ रहा है। माय गॉड, 15 साल से ये चल रहा था, ये बना के बैठे हुए हैं। मैं तो वो बाथरूम देख के हैरान हो गई हूँ। इतने बढ़िया टाइलें लगाई हुई हैं हॉस्पिटलों की तरह। मुझे तो लग रहा है मटेरियल भी हॉस्पिटल का, जो टाइलें टूले लगी हुई थी वो हॉस्पिटल टाइप की लग रही थी कि हॉस्पिटल की। Outside the compound of SHlFA Hospital. We just walked 50 meters from the hospital, and this is the entrance from outside the street. I want you to look closely. It's the same mechanism of staircase going down, and this is the roof that enters into the SHlFA Hospital. When people ask us, why do we need to ruin the buildings next to the area? Why do we work the way we work? It's because Hamas has built a terror infrastructure underneath, underground, underneath the buildings. बिल्डिंग के नीचे था। He uses the way to be close to the hospital, but these kind of tunnels keep on going to different kind of bases, meaning commanders of Hamas go to the hospital, give directions to the forces, go out by these tunnels, and they go out, proceed their terror acts against our soldiers, firing rockets on our civilians, go back and directly to the hospital as a human shield. We're now outside a street which is parallel to the SHlFA Hospital. And it goes, the tunnel system that we saw underneath the SHlFA Hospital gets until this house. I want to show you it. ये हाउस एंट्री है टनल की, इसके हाउस से टनल तो क्या करें, इजराइल वाले कैसे ढूंढें? फिर कहते हैं तुम बॉम्ब मार रहे हो। इस घर में आ रहे हैं, इस घर से टनल जा रही है, शुरू हो गई अंदर से। वो ये तो नहीं, दीवार के अंदर से, ये दीवार के थी और दीवार में थी क्या? नहीं तो घर है। Entering the house. Entering the house now. We're entering the house. In this house, it's a regular apartment. और यहाँ पे It's a regular apartment. एक डोर टनल This का होगा, apartment. कहीं छुपा हुआ होगा टनल कहीं। देखते हैं कहाँ है, जमीन में नीचे। You have नीचे की gear साइड में and equipment. We're entering the room. We're entering the room. Okay, you can see the board. ये तो It's स्कूल like a classroom inside a house. You have the warriors here. Our warriors here are working on the tunnel shaft. ये लो नीचे ये रही छोटी सी सीढ़ियाँ। It was covered with the floor. covered We with- had to remove the floor and understand this tunnel shaft. My Now we're God, going down inside the tunnel shaft. Just imagine how people are building tunnels underneath घरों में home in a room that has a classroom. पूरा दरवाजा, You उसके can बाद see टनल में। We're entering into the tunnel. And the tunnel goes and goes. And then you can see the structure that we already seen of the staircase. A spiral staircase बाप रे, going down into the tunnel that we saw outside the SHlFA Hospital. And this direction also that brings us to areas which is different from the SHlFA Hospital, meaning one direction goes to the SHlFA Hospital, other directions go to different places, different location where the terrorists can move using the safe haven, the human shield of the hospital, the human shield of those regular houses, providing them shelter, बोलो, helping कुछ civilians. बोलेगा?
And, हाउसेस and को they पता है, choose it in the most आते हैं वो लोग, जाते हैं। मिले हुए हैं वो उनके साथ, ये घरों में वो जो रहते हैं वो मिले हुए थे, तभी तो जा नहीं रहे थे छोड़ के। They use it in a room that should have provided जहाँ teaching for बच्चे children. पढ़ रहे हैं उसके साथ ही बनाया। वही तो ह्यूमन This is शील्ड, their choice. देखा, ये दिस इज देयर बच्चे चॉइस। यहाँ बच्चे रखे हुए हैं और बच्चों के साथ ही वो वाला अब समझ में, एक्वेरियम तक रखा हुआ है। वही तो, कितना मतलब भाई गॉड, था ना शॉकिंग, शॉकिंग था। था ना शॉकिंग। और मैं जब इसीलिए बोलती समय थी, लग रहा था उनको आने हाँ, का, क्योंकि पहले दिखा रहे थे छोटी मोटी चीजें, अब पता लगा इतना ह्यूज वो पकड़ा, ढूंढ रहे क्योंकि थे वो कि मुश्किल कितना clean up होगा, कर रहे थे। इतना ये सब ढूंढना, सोच सकते हो कितना मुश्किल होगा। मैंने आपको बोला था शुरू वो में सब मिट्टी कि भर वो के कह गए रहे थे। थे, मैंने सुना था जो न्यूज में, वो कह रहे थे कि हमें एक एक घर में जाके एक एक कोना देखना पड़ेगा, हर दीवार, हर चीज, हर कैबिनेट, हर अलमारी, कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों से टनलें निकाली हुई हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखना होगा कोई बूबी ट्रैप्स ना हो, कहीं हमारे सोल्जर्स के ऊपर कुछ उन्होंने वहां पे लगा लुगू के रख के जा चले गए हो भाग के। और देख लो, कोई सोच ही नहीं सकता, वही सच हुआ है। नीचे देखो इस घर के अंदर, वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल सा खोला हुआ है, ह्यूमन शील्ड यूज कर ली, और यहाँ पे तुमने पूरा, कितना कॉम्प्लेक्स था, ऐसे टेढ़ा 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 टेढ़ा, कितना डीप जा रही थी वो सीढ़ियां और टनल। और वो तो दिखा दिया उन्होंने कि देख लो ऊपर हॉस्पिटल, वो तो बहुत ही मतलब देख के शौक लगता है कि ऊपर हॉस्पिटल है, नीचे इन्होंने बनाया, और सारी बिजली उनसे ले रहे हैं, पानी उनसे ले रहे हैं, खाना उनसे ले रहे हैं। कहते निकलते हैं, ऊपर जाते हैं हॉस्पिटल में, वहां से कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, अपने लोगों को कि क्या करना है, फलाना ठमकाना, फिर वापस इन टनलों से जिस जिस डायरेक्शन में जाके ये काम करने होते हैं, ये निकल जाते हैं। ये अब बताओ, अब बोले जो बोल रहे थे हॉस्पिटल्स हैं, फलाना है, मैं बोल रही थी कि ये उनकी चाल है। मैं तो पहले शुरू से ही बोल रही थी, लोग घबराते हैं बोलने में, मैं डंकी की चोट में बोल रही थी कि ये कर रहे होंगे ऐसा, ये ह्यूमन शील्ड्स कर रहे हैं, वो जानबूझ कर उनको रखा हुआ है उन्होंने। सब लोगों को पता हॉस्पिटल था। वाले भी मिले हुए हैं, हॉस्पिटल मिला हुआ है, लोग मिले हुए हैं, उन्हीं के लोगों के थ्रू तो पूरी टनलें जा रही हैं। तो प्रूफ कर दिया इसराइल ने, माय गॉड, प्रूफ कर दिया कि हॉस्पिटल के नीचे आपको टनल नेटवर्क है, लोगों के घरों के अंदर जहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वहीं से ही टनलें जा रही हैं। तो बुरा हाल था, मतलब बहुत ही, कितना बनाया, और 10 12 15 साल से यही काम चल रहा था। 15 साल से देखें, बाथरूम देखें उनके, कमरे भी, कमरों को भी टाइलें लगाई हुई, एयर कंडीशनड कमरे, और एयर कंडीशनिंग भी कहाँ से आ रही है, हॉस्पिटल के थ्रू। ये है इनकी सच्चाई, तो इजराइल ने निकाली है। अब कौन बोलेगा, अब ह्यूमन राइट्स का कौन बोलने वाला है, मैं अब देखते हैं, अब सबकी बोलती बंद कर दी है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।